Hello everyone, welcome to English Owl. Today we are discussing Supreme Court judgment on EWS. So the news which is actually prevailing is Supreme Court upholds EWS quota in 3-2 split verdict, which is actually their majority and minority view. So the news which is going on is the Supreme Court upholds 10% quota for economically weaker section, no violation of the Constitution. So let's further discuss what the case is all about. So firstly, let's understand कि EWS as a reservation क्या है and how did we get it. The 103rd Amendment of 2019 inserted Article 15(6) and 16(6) in the Constitution to provide 10% reservation to EWS other than the backward classes, SCs and STs in higher educational institutions and initial recruitment in government jobs. So actually in 2019 we had an amendment, that is 103rd, and उसकी वजह से the general people who are not backward classes and not SCs and STs are getting two perks, which is higher educational institutions reservation, and the second is the recruitment in the government jobs. And what was the rationale actually behind bringing this out? The rationale was that the amendment could empower state governments to provide reservations on the basis of economic backwardness. So first time ऐसा हो रहा था in India that we are getting a reservation जो actually monetary terms में है, जो actually economic terms में है. So firstly let's discuss कि Article 15 and 16 क्या है, because all the story is revolving around these two articles. Article 15. Article 15 prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Okay, so this is the trick how we remember Article 15. And Article 16 guarantees. So actually one is prohibiting and one is giving you assurance. एक आपको कह रहा है कि ये चीज़ मत करो, एक आपको गारंटी दे रहा है कि आप ये चीज़ कर लो. Equal opportunity in matters of public employment. So all this case is revolving around these two articles. So now the additional clauses gave Parliament. The additional clauses, कौन कौन से दो clauses जो अभी add हुए हैं, which is we have discussed in our previous slide, which was Article 15(6) and 16(6). So they gave the power to Parliament. What power? To make special laws for EWS as it does for SCs, STs and OBC. So after all these additional clauses, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास में क्या हो गया है, उसके पास में अब पावर हो गई है, कौन सी, एक स्पेशल पावर हो गई है, एक्सपेक्ट कि वो स्पेशल लॉज बना सकती है किसके लिए, EWS, जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है. ओके, जैसे कि वो पहले SCs एंड STs एंड OBCs के लिए लॉज बना रही थी. The EWS reservation was granted based on the recommendation of a commission headed by Major General S.R. Sinho. Okay, so the trick to remember this is, if he would have not been done this, if somebody जो पाप करता है that is sin, उसने जनरल कैटेगरी को निकाला इससे, so which is like sin, पाप नहीं कर रहा है तो S.R. Sinho. Okay, so let's move further. So let's discuss actually कि इस केस में हुआ क्या था. जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अपहेल्ड करा. अपहेल्ड मीन्स टू सपोर्ट.
कुछ अफर्म करना। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या अफर्म करा एक्चुअली, हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जो हमारा जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो किस चीज़ पे डील कर रहा था, फॉर द 10% कोटा, एंड फॉर द 10% कोटा फॉर whom, फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विच वॉज EWS फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरीज। हमको पता है वी हैव टू कैटेगरीज, reserved categories and unreserved categories. The unreserved categories actually the general. Okay, the beneficiaries can avail. The beneficiaries कौन से, ये जो unreserved categories के जो लोग हैं can avail the quota for admission. अब avail इनको क्या क्या facilities actually मिलने वाली है. First is the admission to central institution. Okay, central institution में actually आप अपना जो एक्चुअली एडमिशन के लिए कोटा जो है उसके लिए आप फाइल कर सकते हो आफ्टर दिस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड द सेकेंड इज द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, एंड नाउ यू विल बी गेटिंग कोटाज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। सो दिस इज सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। सो ऑल दिस केसेस which is coming out had a 5-judge bench which constituted actually our Chief Justice U.U. Lalit and Justice Dinesh Maheshwari, Ravindra Bhatt, M. Trivedi and J.B. Pardiwala. And this view actually U.U. Lalit and Ravindra Bhatt were of dissenting views, which is why it is saying that in 3-2 verdict held that the provision of the concerned amendment is not in violation of the constitution. So actually this was in short the conclusion. So actually अब हम डिस्कस करते हैं इसमें एक्चुअली केसेस क्या क्या थे, लाइक इस केस में एक्चुअली इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व थे. मेजरली देयर आर 3 इश्यूज, सो लेट्स डील इन देम. Whether the 103rd constitutional amendment is violative of basic structure for providing reservations solely on the basis of economic criteria. Because this amendment, yeah, actually it was only dealing in economic criterion. इसका बेस जो था वो क्या था, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कि ये जो रिजर्वेशन होगा ये आपको किस चीज़ पे बेसिकली मिलेगा, अकॉर्डिंग टू योर इकोनॉमिक क्राइटेरिया. तो और फर्स्ट इशू इज़ कि वेदर द 103rd अमेंडमेंट इज़ वॉयलेटिव ऑफ दिस बेसिक स्ट्रक्चर. एंड बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेटिव क्यों, बिकॉज ये सोली किस पे है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे. लेट्स डील इनटू आवर सेकेंड इशूज. वेदर द अमेंडमेंट इज़ वॉयलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर for excluding the poor among the SC, STs, OBCs category from EWS quota. So this is again saying कि अगर आपने एक कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया है, एक कैटेगरी के पुअर को रिजर्वेशन दिया है और दूसरे कैटेगरीज के पुअर को अगर हटाया है, तो इज़ इट वॉयलेटिव हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो इज़ इट वॉयलेटिव और नॉट, विच विल डील. And the third issue is whether the amendment is violative of the basic structure for breaching the 50% ceiling limit. So let's just discuss this further. So these are like the judges who have given their views. Let's discuss them one by one. So let's just discuss first Justice Trivedi, because this case is all about the opinions and the views which the judges has given. So we'll just discuss them elaborately. Justice Trivedi was of the view that treating economically weaker section of citizen as a separate class would be a reasonable classification and could not be termed as unreasonable or unjustifiable classification, much less a betrayal of basic feature or violative of Article 14. So actually what is Justice Trivedi saying?
दैट अगर आपने ट्रीट करा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एज सिटीजन्स, एज अ सेपरेट क्लास, ये जो चीज़ है दैट विल बी रीजनेबल, ओके। और ये कोई अनरीजनेबली नहीं मानी जाएगी, कोई अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं होगा ये, और ये कोई बिट्रेयल नहीं होगा ऑफ आर्टिकल 14, ओके। सो एक्चुअली जस्टिस त्रिवेदी इज सेइंग कि जो हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है वो वैलिड है, बट शी सेड वन मोर थिंग, दैट देयर इज़ अ नीड टू रीविजिट द रिजर्वेशन पॉलिसीज, revisit the reservation policies, because all our policies are very much backward, बहुत पुरानी हो गई है, हमें उनको बार बार revisit करने की ज़रूरत है. So these two things are coming from Justice Trivedi, that 103rd का जो constitutional amendment है वो valid है, but हमें उसे revisit करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, revisit करना policy को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So let's go to the next judge, which is Justice Maheshwari. Justice Maheshwari rejected the argument that providing the EWS quota over and above the 50% ceiling fixed by the Mandal Commission case will violate the basic structure, saying that the ceiling limit is not inflexible and in any case only applies to the reservation envisaged for the already reserved category. So actually जो आर्ग्यूमेंट आया था कि जो EWS को कोटा को अगर हम देते हैं 50% से तो ये वॉयलेट हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर को, तो जो जस्टिस माहेश्वरी है उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि नहीं, इट विल नॉट बी वॉयलेटिव. सो एक्चुअली जस्टिस माहेश्वरी इज गिविंग द व्यू ऑफ दैट 103rd इज वैलिड. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट जज, विच इज आर PB Pardiwala. So what is actually he saying? Who also formed the majority which upheld the EWS quota said, reservation is not an end but a mean. Because reservation से आप कुछ चीज़ें end नहीं कर रहे हो, बल्कि आप लोगों को एक means दे रहे हो. What type of means? To secure social and economic justice, reservation should not be allowed to become a vested interest. So he is also saying that कि अगर आपने reservation दिया है तो ये in itself should not be an end but it is a mean, ताकि सब जने जो अपना secure कर सके social and economic justice. So actually even he is of a view that 103rd constitutional amendment is valid, but reservation cannot go to indefinitely. Like आप इसको एक पीरियड के लिए फिक्स करो या अपना एक जो पीरियड है या जो टेन्योर है वो आप डिसाइड करो. ओके, सो दीज वर द टू व्यूज. सो लेट्स गो now to the dissenting judgment, like the minority view which was not in favor of the other judges. Okay, in these two were UU Lalit and Ravindra Bhatt. So what is actually Ravindra Bhatt is saying is, who authored the minority view, we have two judges in minority view, on the constitution bench said, upholding the economically weaker section quota will run the danger of selling the fate of a pending challenge to the 69% reservation in Tamil Nadu without the benefit of hearing. So actually he is saying that we will have some kind of dangers and everything to our fate, and so actually he actually disagreed with the majority view and he said that 103rd constitutional amendment should not be valid. And let's discuss this view of our CJI UU Lalit upon the EWS. However, all judges agreed that reservation on basis of economic status was justified in the light of the constitutional amendment, while also approving the quantum of the quota going beyond the 50% ceiling that the Supreme Court had laid down in the Indra Sahani case. So actually this is even very important for examination purpose,
कि जो 50% की जो सीलिंग है दैट वी आर डिस्कसिंग वो कौन से केस में से आई थी, दैट इज़ इन द इंदिरा साहनी केस. So let's discuss CGI Lalit and Justice Bhatt struck down the amendment holding the exclusion of SCs, STs and OBCs from the purview of economic backwardness to be discriminatory and arbitrary. So Justice Lalit said कि जो ये आ रहा है हमारा constitutional amendment, it is discriminatory and arbitrary, which means ये डिफ्रेंसिएशन कर रही है एंड ये एक मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली क्रिएट कर रही है. सो लेट्स डिस्कस फर्दर व्हाट ही हैज सेड. एक्सक्लूडिंग पुअर फ्रॉम रिजर्व्ड क्लासेस डिस्क्रिमिनेटरी minority judgment. In their minority verdict, Chief Justice U.U. Lalit and Justice Ravindra Bhatt held that the 103rd constitutional amendment was discriminatory in not allowing the poor from the reserved classes to get the benefits of reservation while giving benefits to only general classes and okay. So actually it is only saying that कि अगर आपने एक क्लास को रिजर्वेशन दिया है एंड दूसरी क्लासेस को रिजर्वेशन नहीं दिया है तो दिस इज़ डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. लाइक आप किसी पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप एक क्लास को दूसरी क्लास से डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हो. सो दिस वॉज द व्यू ऑफ जस्टिस U.U. Lalit and Justice Ravindra Bhatt. So let's do a quick comparison between the majority and the minority view. Like what was the difference and actually what was going on. So the majority said that कि जो ये अमेंडमेंट है ये वॉयलेटिव नहीं है ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो ये अमेंडमेंट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का बिल्कुल भी वॉयलेटिव नहीं है. एंड वेयर एज व्हाट डिड द माइनॉरिटी व्यू सेड. माइनॉरिटी व्यू सेड दैट जो ये अमेंडमेंट है ये वॉयलेटिव है. और ये वॉयलेटिव क्यों है? बिकॉज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्सक्लूडिंग द पुअर ऑफ द सेबिस इज इनकरेक्ट. मतलब आपने एक कैटेगरी के लोगों को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया है उन पुअर को, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वॉयलेटिव. एंड वाई वॉयलेटिव? बिकॉज 16(1) and 16(4) आर फेसेस ऑफ द सेम इक्वालिटी प्रिंसिपल. एंड लेट्स डिस्कस द सेकेंड वन. Reservation structured singularly on economic criteria does not violate the basic structure of the constitution. Like they are saying कि अगर कोई reservation economic criteria पे बना है तो ये violative नहीं होगा of the basic structure. ये जो हमारा basic structure है उसका ये reservation जो होगा economic criteria पे बना हुआ तो ये violative नहीं होगा. And what did the minority view said upon this? Reservation of economic criteria is per se not violative. Even they are saying कि हमने नहीं बोला है कि ये violative है. But what is actually happening? But excluding the poor. अगर आपने एक कैटेगरी के पुअर को दूसरी कैटेगरी के लोगों से करा है कंपैरिजन करके तो क्या होगा? आप इसका वायलेशन जो हैगा वो कर रहे हो. सो हेंस 103rd अमेंडमेंट प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिट्स फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. So this is a discrimination policy. Let's just discuss this comparison. The breach of 50% ceiling limit by EWS reservation does not violate the basic structure because ceiling limit is not inflexible. Like जो ये जो ceiling limit है that is flexible in short. So ये जो breach हो रहा है 50 limit ceiling limit का, it is not a breach. Why? This is the reason. क्योंकि जो ceiling limit है that could be flexible, okay? And the reason which is provided to them is reservation is not an instrument of reservation is an instrument of affirmative action by state so as to ensure all inclusive approach. We all know that state ने जब अपने खुद के affirmative actions लिए हैं to do something, so what this happens? It is actually an approach of inclusive approach only. ये जो they are saying कि अगर जो minority वाले लोग बोल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा exclusive है, no, it is not that exclusive in everything. It has a inclusive approach also. And in comparison to this, the minority are saying कि अगर हम हर किसी को, अगर ये हो रहा है 50% breach
तो ये क्या रिजल्ट करेगा इन कंपार्टमेंटलाइजेशन, कि फिर तो ऐसा हो जाएगा कि आपने एससीज को अपना कोटा दे दिया, एसटीज को अपना कोटा दे दिया, ओबीसीज को अपना, और जो जनरल कैटेगरीज है उनको भी। तो एक बहुत ज़्यादा जो कंपार्टमेंट्स होंगे इन आर सोसाइटी वो हो जाएंगे, और हम इक्वालिटी और जो इक्वल्स की बात करते हैं वो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। So this is like the thing which we have taken from Times of India only. So let's come into the conclusion. Okay, this is actually funny also, but let's just discuss this. Like earlier, there was this celebration of reservation in which we had 3 categories, कि SC भी अपना केक खा रहा था, ST भी अपना केक खा रहा था of reservation. And now, after this judgment, we have another category which is EWS, which is getting their own 10% quota, and that too from 103rd Constitutional Amendment Act. That's it. Thank you.